Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic for discussion is complex sentence. Dear students, a complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses. A complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clauses. As we know, an independent clause can stand alone as a sentence, but a dependent clause, even though it has a subject and a verb, cannot stand alone. Students, here are some examples of complex sentence. The independent clause is in bold. Number first, Bashir was delighted. He got a part in the school play, even though the part was a small one. Bashir was delighted. He got a part in the school plays. So this sentence is an independent. This clause is an independent clause. Even though the part was small one, this is dependent clause, right? Bashir was delighted. He got a part in the school play. This is independent clause. Even though the part was small, this is dependent clause. Number second, because my porridge had gone cold. Porridge, it means food. It's a sort of food. Because my porridge had gone cold, I heated it in the microwave. I heated it in the microwave. It is independent clause. Because my porridge had gone cold, this is dependent clause, right? Example number third, after lots of practice, Wasim still struggled to tie his shoelaces. So this Wasim still struggled to tie his shoelaces. This is independent clause. After lots of practice, this is dependent clause, right? Number 4 example, let us go back to the theater where we watched the ballet. Let's go back to the theater. So this is independent clause, and where we watched the ballet, this is dependent clause. After the storm hit the town, this is dependent clause. Trees lay broken in the streets, this is independent clause. So students, let us explain this complex sentence again. As we have noted from the examples above, a complex sentence can either start with an independent clause or with a subordinate clause. हमने ऊपर examples में देखा ये जो complex sentence है कभी start independent clause से होता है और कभी subordinate clause से start होता है. So as we have noted from the above examples, a complex sentence can either start with the independent clause or with the subordinate clause. If the subordinate clause comes first, we must add a comma, right? This is not needed if the independent clause comes first. An independent clause contains a subject and a verb. It can stand alone as a complete thought. जैसे हमें पता है, जैसे हम जानते हैं, as you know that independent clause is a contains a subject and a verb. इसका एक subject होता है और एक verb होता है, so it can stand alone as a complete thought. ये जो independent clause होता है इसमें एक complete thought होता है. For example, the football match was cancelled. The example इसकी है, the football match was cancelled. ऐसा अब subordinate clause जरा आप understand कीजिए. A subordinate clause cannot stand alone. It needs to be linked to the independent clause to make sense. इसको ज़रूरी किसके साथ कनेक्ट करना होता है, लिंक करना होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, ताकि इसका एक सेंस निकल आए, कंप्लीट सेंस इसका मालूम हो जाए. सो subordinate clause cannot stand alone. It needs to be linked to the independent clause to make sense. एग्जाम्पल इसकी क्या है ज़रा देखिए. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, इसकी कंप्लीट सेंस नहीं निकलती इस सेंटेंस की. सो
when we put these two sentences together, इसका एक complete माने निकलता है, ज़रा आप अंडरस्टैंड कीजिए. Put the two sentences together and we have a complex sentence. जब हम दोनों को हम टुगेदर एक ही जगह मतलब रखते हैं, जब हम इनको इकट्ठे रखते हैं तो क्या होता है, इनका एक वी हैव एक सेंटेंस बनता है जिसे कहते हैं कि दिस इज़ जिसे हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. सो पुट द टू टुगेदर वी हैव ए कम्प्लेक्स सेंटेंस. Often the sentence will make sense when the independent clause or the subordinate clause is put first. Often the sentence will make sense whether the independent clause or the subordinate clause is put first. ज़रा आप देखिए, हम पहले डिपेंडेंट क्लॉज को पहले ही रखते हैं, फिर भी इसका सेंस निकलता है. बिकॉज इट वॉज रेनिंग द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड. The football match was cancelled. This is independent clause. Because it was raining, so this is dependent clause. हमने यहाँ पे because it was raining dependent clause लिखा पहले और उसके बाद independent clause लिखा. Now next इसी को हम ऐसे लिखते हैं. The football match was cancelled. Independent clause हमने पहले यहाँ पे लिखा because it was raining. यहाँ पे भी माने निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलता है. सो डिफरेंस अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करें थोड़ा डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड सेंटेंस एंड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ज़रा आप देखिए कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या डिफरेंस है. कंपाउंड सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या डिफरेंस है हम अंडरस्टैंड करेंगे. ए कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. जैसे हम जानते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस है इसके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और each of these clauses is equally important. They are joined by coordinating conjunctions. जैसे कि हमने पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया है कि they are joined by these independent clauses. They are joined by coordinating conjunctions. That does not change the rank of either clause. उसमें किसी clause की change या rank change नहीं होती है. For example, he sang and she danced. And यहाँ पे क्या है? So this is coordinating conjunction. So यहाँ पे आप ज़रा देखिए, he सब्जेक्ट है, sang क्या है, दिस इज वर्ब, एंड क्या है, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. राइट. सो देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दैट enable टू क्लॉजेस टू बी इक्वल. हम एक बार फिर मैं यहाँ रिपीट करता हूँ कि हमारे पास कितने हैं, 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. और फॉर एंड नॉर बट और येट सो. ज़रा आप इस तरह इसको याद कीजिए, फॉर एंड नॉर बट और येट सो. सो इनको हम इस्तेमाल करते हैं इन टू इंडिपेंडेंस क्लॉज को ज्वाइन करने में. और जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जब हम ज्वाइन करते हैं इन दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, सो फिर यहाँ पे इनकी रैंक चेंज नहीं होती है. अब ज़रा देखिए, ए कॉम्प्लेक्स, यह हमने अंडरस्टैंड किया ये कंपाउंड सेंटेंस. ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक, यह हमने ऊपर भी अंडरस्टैंड किया, डिस्कस किया. ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसका एटलीस्ट वन इसका एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है. यानी डिपेंडेंट क्लॉज और भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट इसका एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. सो दिस मीन्स दैट द क्लॉज आर नॉट इक्वल. वो इसमें उसमें क्लॉज इक्वल होते हैं और इसमें क्लॉज इक्वल नहीं होते हैं. कंपाउंड सेंटेंस में उनकी रैंक जो एक ही होती है और इनकी रैंक जो है वो डिफरेंट होती है. दिस मीन्स दैट द क्लॉज आर नॉट इक्वल. दे यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सो इन this complex sentence we use subordinating conjunctions that changes the rank of one or more of the clause to make it less equal. For example, my dad laughed when I told a joke. This is independent clause. और फिर यहाँ पे क्या है, when जो है this is subordinating conjunction और then I told a joke, this is dependent clause. ठीक है ना. So अब students, if we take away when we would have two equal clauses. अगर हम इनमें से when निकालें बाहर तो we would have two equal clauses. My dad laughed and I told a joke. ये दो clauses हैं. The use of the conjunction when connects the clauses but displays a complex relation between the two, indicating which is dominant and which is subordinate. फिर जब हम इसको यहाँ पे ये
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, तो फिर इट इंडिकेट्स विच इज़ डोमिनेंट एंड विच इज़ सबऑर्डिनेट, which is independent and which is dependent, thus a complex sense. So there are lots of subordinating conjunctions. Students, हमारे पास बहुत सारे subordinating conjunctions हैं, बट कुछ हम यहाँ पे बोलता हूँ मैं, तो इनको आप याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर है, वाइल है, बिकॉज है, सिंस, इफ़, व्हेन, एक्स्ट्रा हमारे पास है. तो ये हमने कंप्लीट किया, हमने सिंपल भी अंडरस्टैंड किया, कंपाउंड भी अंडरस्टैंड किया, और कंपाउंड भी. इन तीन, ये इसका तीसरा लेक्चर था. तो नाउ वी विल ट्राई कि कैसे सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, एंड वाइस वर्सा. इनको हम कल से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.